हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू TalentSprint। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को हम और भी कई सारे टॉपिक्स में यूज करेंगे, जैसे एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। तो इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये जरूरी है कि आप इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू, और फिर सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो पहले देखते हैं रेशियो क्या है। रेशियो, जिसे हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, राइट। रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो बेसिकली रेशियो इज ए कंपैरिजन। हमें इस वर्ड कंपैरिजन पे ध्यान देना है। कंपैरिजन यानी तुलना। यहां पर हम किन्हीं दो वैल्यूज की तुलना करते हैं। तो रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखते हैं कि लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है। मान लें कि दो पर्संस हैं, ए और बी। अब हम किन पैरामीटर्स को कंपेयर कर सकते हैं? जैसे ए के वेट को बी के वेट से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ए और बी के वजन को कंपेयर कर सकते हैं, ए और बी की हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, ए और बी की एज को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर ए और बी की सैलरीज को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम ए के वेट को बी की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर ए की सैलरी को बी के वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि दोनों जो हम टर्म्स कंपेयर कर रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। वेट को वेट से कंपेयर करें, हाइट को हाइट से कंपेयर करें, और सैलरी को सैलरी से, राइट। हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी बहुत ही सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, जिसे हम और सिंप्लीफाई ना कर सके। अब देखते हैं कि रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं। रेशियो, जैसे ए और बी, मान ले हम ए और बी को कंपेयर करना है, तो लिखेंगे ए इज टू बी। ए इज टू बी। हम रेशियो को डिनोट करते हैं कोलन के सिंबल से, राइट। ये जो दो डॉट्स है इसे हम कोलन कहते हैं, कोलन के सिंबल से, और इसे हम पढ़ेंगे इज टू, राइट। इसे रीड करेंगे इज टू। सो ए इज टू बी, राइट, का मतलब होता है ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी के बीच का कंपैरिजन, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप, ए इज टू बी, राइट। इसे हम ए बाई बी भी लिख सकते हैं, राइट। सो या तो ए इज टू बी कहें या ए बाई बी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हो गया डेफिनेशन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि रेशियो निकाला कैसे जाता है। अब मान लें कि कुछ टोटल अमाउंट है जिसे हमने ए और बी के बीच में डिवाइड किया है, राइट। तो ए को मिले 80 रुपीज और बी को मिले 60 रुपीज। तो ए के पास है 80 रुपीज, राइट। ए के पास है 80 रुपीज और बी के पास है 60 रुपीज। अब हमें रेशियो निकालना है, ए और बी के बीच का रेशियो निकालना है, ए इज टू बी या फिर बी इज टू ए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ए इज टू बी हम कैसे निकालेंगे? ए इज टू बी, जैसे मैंने कहा ए बाई बी भी लिख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ए के पास है 80 रुपीज और बी के पास है 60 रुपीज। अब देखना यहां पर ये कि दोनों टर्म्स एक जैसे हों, दोनों ही रुपीज हैं, राइट। 80 रुपीज और 60 रुपीज, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए, राइट। दोनों रुपीज में है, या फिर दोनों केजीज में हो, या फिर दोनों सेंटीमीटर्स में हो, राइट। एक जैसे यूनिट्स होने चाहिए। तो ए इज टू बी हो गया 80 बाई 60, कंपेरिजन हो गया 80 बाई 60, लाइक टर्म्स है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब 80 बाई 60 को हम यहां पर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि 80 इज टू 60 रेशियो है, राइट। यहां पर रेशियो 80 इज टू 60 कहना एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, जीरोस कैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और बचा 8 बाई 6। 8 बाई 6 को हम कह सकते हैं 4 बाई 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 4 इज टू 3, 4 बाई 3। अब इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, राइट। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4 बाई 3। सो 4 इज टू 3 इज द रेशियो। सो हम कहेंगे कि अगर ए के पास 80 रुपीज हो और बी के पास 60 रुपीज, तो रेशियो बन जाता है 4 is to 3, right? So A is to B is equal to 4 is to 3। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि रेशियो कैसे निकालते हैं किन्हीं भी दो वैल्यूज का। सिंपली दोनों वैल्यूज को लिख लें A by B या B by A के फॉर्म में, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर सिंप्लीफाई करें उस हद तक जहां पर हम इसे और सिंप्लीफाई ना कर सके। 4 is to 3 बन गया रेशियो। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 4 is to 3 हम जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। पॉइंट यहां पर यह है कि जब हम कहेंगे a is to b equals to 4 is to 3, इसका मतलब होता है कि किसी टोटल चीज को हमने, किसी टोटल वैल्यू को हमने, या वो अमाउंट हो सकता है, या फिर वेट हो सकता है, या टोटल हाइट हो सकती है, उसे हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों 7 पार्ट्स? क्योंकि 4 + 3 होता है 7,
राइट। रेशियो हो गया 4:3। तो हम कह रहे हैं यहां पर कि हमने किसी चीज को, किसी टोटल वैल्यू को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स जाते हैं ए को और 3 पार्ट्स जाते हैं बी को, राइट। A:B यहां पर है 4:3। 4 + 3 का टोटल होता है 7, यानी टोटल 7 पार्ट्स हैं, 7 इक्वल पार्ट्स है और 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स गए ए को और 3 पार्ट्स बिलोंग करते हैं बी को, यानी हमें 7 इक्वल पार्ट 7 भाग में डिवाइड करने हैं, राइट, जिसमें से 4 जाएंगे ए को और 3 जाएंगे बी को। इसी प्रकार से किसी और रेशियो, मान ले x:y है 5:7। अब इसे हम कैसे समझेंगे? यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए? 5 + 7 12 पार्ट्स, यानी किसी टोटल को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 5 पार्ट्स हैं x के लिए और 7 पार्ट्स हैं y के लिए। तो क्लियरली जैसे ही हम रेशियो देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, राइट। a इज ग्रेटर देन b, 4:3 है रेशियो। इसका मतलब है कि a के पास 4 पार्ट्स हैं जो कि b से ज्यादा है, यानी a इज ग्रेटर देन b या b इज लेस देन a। यहां पर x:y = 5:7। क्या मतलब बनता है कि x के पास 5 हिस्से हैं और y के पास है 7 हिस्से, 7 बराबर के हिस्से। तो क्योंकि 5 7 से कम है, 5 इज लेस देन 7, हम कह सकते हैं x इज लेस देन y। तो पॉइंट है कि किसी टोटल वैल्यू को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और उन टोटल पार्ट्स को हम देख रहे हैं कि a के पास और b के पास कितने पार्ट जा रहे हैं। ये हमें पता चलता है रेशियो से। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज पता करनी हो, राइट, हमें a की वैल्यू पता करनी हो, तो a के पास है टोटल कितने पार्ट्स? 4 आउट ऑफ 7, राइट। टोटल 7 में से, टोटल 7 पार्ट्स में से a के पास है 4 पार्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि a का जो फ्रैक्शन है वो है 4/7, a का हिस्सा है 4/7। और इसी प्रकार से b का हिस्सा होगा 3 पार्ट्स, राइट, 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट्स। यहां पर हम कहेंगे कि x = 5 आउट ऑफ टोटल 12, राइट। टोटल 12 में से x के पास है 5 और y के पास है टोटल 7 आउट ऑफ 12। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम किसी भी रेशियो को पार्ट्स के थ्रू समझ ले, पार्ट्स के कॉन्सेप्ट से समझ ले, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत हद तक इजी हो जाता है। तो अब देखेंगे कि इस फ्रैक्शन का हमें क्या यूज है, इस फ्रैक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब टोटल इंडिविजुअल वैल्यूज हमें दी गई है, ए के पास 80 रुपीज और बी के पास 60, तो हमने रेशियो निकाल लिया 4:3। कई बार रेशियो दिया जाता है और टोटल वैल्यू दी जाती है, राइट। जैसे ए और बी के पास है टोटल, मान ले 140 रुपीज और इसे हमने डिवाइड किया है 4:3 के रेशियो में, और हमें पता करना होता है कि ए और बी के पास इंडिविजुअली कितना अमाउंट है, राइट। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देख रहे हैं कि 80 + 60 है 140 रुपीज, राइट। सो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 140 रुपीज। 140 रुपीज को हमने ए और बी के बीच में डिवाइड किया 4:3 के रेशियो में, तो ए की वैल्यू कितनी हुई और बी की वैल्यू कितनी हुई? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए के पास है 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 7 और बी के पास है 3 आउट ऑफ 7। हम जैसे हमने पहले देखा था कि ये इंडिविजुअल फ्रैक्शन हो गया कि ए के पास 4/7 हिस्सा है और बी के पास है 3/7। तो अब जैसे ही हम इस इंडिविजुअल फ्रैक्शन को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इंडिविजुअल वैल्यूज पता चल जाएगी। सो 4/7 × 140 और यहां पर 3/7 × 140। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 यहां पर 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 4 × 20 होता है 80 रुपीज, और यहां पर अगेन 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 × 20 हो गया 60 रुपीज। तो देखा जैसे आपने ए के पास है 80 रुपीज और बी के पास 60, जैसे हमने इनिशियली अज्यूम किया था, राइट। तो जैसे हम सभी ने देखा यहां पर 2 प्रकार के कैलकुलेशंस है। एक, जब हमें इंडिविजुअल वैल्यू दी गई हो हम कैसे रेशियो निकालेंगे, और दूसरा, जब हमें रेशियो और टोटल वैल्यू दी गई है हम कैसे इंडिविजुअल वैल्यूज को निकालेंगे, राइट। यहां पर भी x:y 5:7। अब मान लें कि टोटल अमाउंट है या टोटल वेट, x और y का टोटल वेट है 240 kgs, राइट, 240 kgs, और हमें पता करना है इनका इंडिविजुअल वेट। कैसे करेंगे? 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 12 है x के पास और y के पास है 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट से 240 से, तो 5/12 × 240 और 7/12 × 240। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 गोस 20 टाइम्स, 5 × 20 100 kgs, और y का वेट हो जाएगा 12, फिर से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, 7 × 20 140 kgs, यानी x का वेट है 100 kgs और y का वेट है 140 kgs। टोटल देखते हैं 100 + 140 240 kgs। तो इस प्रकार से जब हमें रेशियो और टोटल वैल्यू दी गई हो हम इंडिविजुअल वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ना कि सिर्फ दो वैल्यूज के लिए, चाहे कितनी भी वैल्यूज हो, रेशियो का कॉन्सेप्ट सेम होता है। मान ले कि हम 3 पर्संस के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, राइट, 3 वैल्यूज के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, उसे हम लिखेंगे A:B:C, राइट। फॉर एग्जांपल A:B:C इज 3:4:8, 3:4:8, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने पार्ट्स है, 3 + 4 7, 7 + 8 15, यानी 15 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स गए ए को, 4 बी को और 8 पार्ट्स गए हैं सी को। तो अगर हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम लिखेंगे 3 आउट ऑफ टोटल 15, और जो भी टोटल वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करने से हमें इंडिविजुअल वैल्यू पता चल जाएगी। इसी प्रकार से बी की वैल्यू हो गई 4 आउट ऑफ 15 और सी की वैल्यू हो गई 8 आउट ऑफ 15। तो इन फ्रैक्शंस को हम टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। Proportion is an equality between two ratios, यानी proportion वो होता है जब दो रेशियोस इक्वल हो, राइट। जब हम दो रेशियोस को इक्वेट कर सके या दो रेशियोस इक्वल हो तब हम उसे प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे A:B इज इक्वल टू C:D, राइट। यहाँ पर A:B एक रेशियो है और C:D दूसरा रेशियो है, और क्योंकि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, इस प्रकार के इक्वेशन को हम प्रपोर्शन कहते हैं। जब दो रेशियोज इक्वल हो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। और यहां पर ABCD आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। यहां पर हम ये कहेंगे कि ABCD एक प्रपोर्शन में है, और इंडिविजुअली ABCD को हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शनल्स। यानी जब दो रेशियोज इक्वल हो उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। ABCD सारे यहां पर एक प्रपोर्शन में है। A है फर्स्ट प्रपोर्शनल, B है सेकंड प्रपोर्शनल, C है थर्ड प्रपोर्शनल और D होता है फोर्थ प्रपोर्शनल। और A and D are called extreme proportionals and B and C are called mean proportionals। यहां पर जैसे हम देख रहे हैं A और D एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स कहते हैं। A और D को हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स जो एंड पे हैं, और B और C को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स, राइट। ऐसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल्स है, लेकिन स्पेशली A और D कहे जाते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स क्योंकि ये टुवर्ड्स एंड होते हैं उस प्रोपोर्शन के, और B और C क्योंकि बीच में है, इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स। सो ये है बेसिक डेफिनेशन प्रोपोर्शनल का, राइट। प्रपोर्शन का प्रपोर्शन वो होता है जब दो रेशियोज इक्वल हो। तो ये है एक बेसिक डेफिनेशन प्रपोर्शन का, राइट। जब कभी दो रेशियोज इक्वल हो या हम दो रेशियोज को इक्वेट कर सके उसे हम प्रपोर्शन कह सकते हैं। यहां पर और एक पॉइंट हमें ध्यान देना है कि A:B इक्वल्स टू C:D। अब हम जब दो रेशियोज को इक्वेट करेंगे A:B इक्वल्स टू C:D, जैसे हमने देखा था A:B होता है A/B और C:D को हम कह सकते हैं C/D। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे A:D इज इक्वल टू B इंटू सी, A:D इज इक्वल टू B इंटू सी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे हमने देखा A और D को हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स, A और D हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स, और B और C को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स। तो इक्वेशन यहां पर ये बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स, राइट। हम जब एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शनल से, राइट। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शनल्स। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शनल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या कंक्लूजन है जो कि हम प्रपोर्शन के डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, राइट। अब हम इस प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट के यूजेज को समझ लेते हैं कि कहां पर हम प्रपोर्शन को यूज कर सकते हैं। मान ले कि आप कहीं जा रहे हो, राइट, कुछ डिस्टेंस कवर करनी है आपको और एक पर्टिकुलर स्पीड पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम सभी समझते हैं कि टाइम जो रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर। अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमें कम डिस्टेंस कवर करनी है तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। यानी अगर किसी कांस्टेंट स्पीड पर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे ही टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे टाइम भी कम होगा। तो टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, राइट। तो यहां पर हम इस प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्योंकि टाइम डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो इक्वल होगा डिस्टेंस के रेशियो से, यानी T1/T2 will be equal to D1/D2। T1/T2 is equal to D1/D2। अब T1, T2, D1, D2 क्या है? T1 टाइम रिक्वायर्ड टू कवर D1, T2 इज टाइम रिक्वायर्ड टू कवर D2। यानी D1 डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा T1 और D2 डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो लगा था वो था T2। तो T1/T2 का रेशियो
d1/d2 के रेशियो से इक्वल होगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है। यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, टाइम हमेशा डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होती है। सो t1/t2 इक्वल्स टू t1/t2। अब t1/t2 इज नथिंग बट a रेशियो, t1:t2, राइट? टाइम का रेशियो है और ये है डिस्टेंस का रेशियो। सो टाइम रेशियो इज इक्वल टू द डिस्टेंस रेशियो, इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, ये एक टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। यहां पर टाइम रेशियो इक्वल है डिस्टेंस रेशियो से। इसी प्रकार से इस प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को हम और भी कई सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो या पार्टनरशिप, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स एक्सेट्रा। तो इसी कारण रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली और अच्छे से समझ लें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इस टॉपिक से। Let us start with the first model from ratio and proportions, where we are supposed to find out the ratio between two similar quantities. The question here is, a company A sells a 53 centimeter model TV at the price of rupees 7,000, whereas another company B sells the same model at the price of rupees 16,800. What is the ratio of their respective selling prices? So here we are supposed to find out the ratio of the prices of the two companies. As discussed earlier, ratio is nothing but a comparison. So here we can say that the price of A is to the price of B should be equal to 7,000 is to 16,800. And by taking this into the most simplest form, we get the ratio between A and B. And this can be taken as 7 into 10 and 7 into 24, which again can be further simplified as 5 is to 12. So we can say that the ratio of the prices of A and B is 5 is to 12. Similarly, we can sometimes have three quantities which have to be compared, and there the ratio can be taken as A is to B is to C. For example, A is to B is to C is equal to 3 is to 4 is to 5. So the concept remains same, but the only thing is here we have a third quantity. And if you want to take the individual fractions, they can be taken as A equals to 3 parts out of total 3 plus 4, 7 plus 5, 12 parts. B has got 4 parts out of total 12 parts, and C has got 5 parts out of a total of 12 parts. So whether there are 2 or 3 quantities, the concept of ratio remains same. Let us now take the second example based on the first model, that is nothing but the concept of ratio. The question here is, in an entrance test, the ratio of appeared to successful students was 21 is to 11. Find the number of successful students if 1176 students appeared in the test. So as given in the question, the ratio of appeared students is to successful students is 21 is to 11. That means if the number of appeared students are taken as 21 parts, the number of successful students can be taken as 11 parts. And the question says the total number of students who appeared in the test were 1176. So very clearly the number of students who appeared is 1176. So from the ratio we can say that the number of students appeared is 21 parts. So this 21 parts can be equated to 1176, and we are supposed to find out the number of successful students, that is nothing but 11 parts. So we can say 11 parts should be equal to what? So this is the number of appeared students and this is the number of successful students, and simply by cross multiplying these two we can get the answer. So we can say that the number of successful students should be equal to 1176 into 11 divided by 21. And by simplifying this, we can say that the total number of successful students will be equal to 616. Let us now take the third simple example from model 1, which is again based on the concept of ratios. The question here is, the ratio of boys and girls studying in a school is 17 is to 18. If the number of boys is 150 less than the girls, then what is the total number of girls? So from the given question we can say that the ratio of boys and girls B is to G is equal to 17 is to 18. And as discussed earlier, we can understand that if the total number of students are divided into some equal parts, boys will be getting 17 parts and the girls are equal to 18 parts. Now the next statement here is number of boys is 150 less than the girls.
Now very clearly, if we try to understand the difference of the number of parts, the girls are equal to 18 parts and the boys are 17 parts. So very clearly, the number of boys is 1 part less than the number of girls. So we can say that 1 part that is equal to x will be equal to 150. As given in the question, the boys are 150 less than the girls. And we are supposed to find out what is the total number of girls. From the ratio, we know that total number of girls are 18 parts. So the number of girls will be equal to 18 parts. That is nothing but 18x. So by cross multiplying, we can say that number of girls should be equal to 18 into 150, which comes out to be 2700. So the total number of girls in the school is 2700. So friends, from the examples that we have discussed so far, we can understand that it is always easy to solve the questions if we consider the given ratio as the distribution of number of parts. Let us now discuss the second model from ratio and proportions, where we are supposed to find out the difference between the shares of two persons from the given ratio. The question here is, a profit of rupees 8,000 is distributed among A, B and C in the ratio 5:2:3 respectively. What is the difference between the shares of A and B? So from the given ratio and the total amount, we first need to find out the individual shares of each of these persons, and then we need to take the difference between the shares of A and B. So as given here, the total amount is rupees 8,000 and the ratio among A, B and C should be 5:2:3. Now the general way of solving the question would be finding out the individual shares of A and B and then taking the difference. That is, A's share will be equal to 5 parts out of 5 plus 2, 7 plus 3, 10. 5 parts out of 10 parts, which should be multiplied by the total value of 8,000. And this comes out to be 4,000 rupees. And B's share will be equal to 2 parts out of 10 parts, which again multiplied by 8,000 will give 1600 as the answer. And from these two, we can say that the difference of their shares, A and B, should be equal to 4,000 minus 1600, which comes out to be 2,400 rupees. So friends, this is the conventional way of solving the problem. But then this question can be simplified without writing these many steps in a few seconds. The simple idea here is, we know that the total number of parts among A, B and C is 5 plus 2 plus 3. That is nothing but total 10 parts. So when 8,000 is divided into 10 equal parts, we can say that each part will be equal to 800 rupees. Because 8,000 divided by 10 will be equal to 800. And from the ratio, we know that A will get 5 parts, whereas B gets only 2 parts. So the difference between A and B, that is 5 parts minus 2 parts, should be equal to 3 parts. So we can directly say that the difference of A and B should be equal to 3 parts. That is nothing but 3 into 800, as each part is equal to 800. So the total difference will come out to be 2,400 rupees. So without taking the individual values and then taking the difference, we can simply get the answer by finding out the value of each part and then taking the difference between the number of parts of the two persons. Let us now discuss the third model from ratio and proportions. The question here is, a sum of money is divided among A, B, C and D in the ratio 3:5:8:9 respectively. If the share of D is rupees 1,872 more than the share of A, then what is the total amount of money of B and C? So here, from the given data, we are supposed to find out the total amount with B and C together. Now, as given in the question, we know that the ratio of A is to B is to C is to D is equal to 3:5:8:9. That means the total when divided into equal number of parts, A gets 3 parts, B gets 5 parts, C gets 8 parts and D gets 9 parts. The next statement here is the share of D is 1872 more than the share of A. That means D has got rupees 1872 more than A. So we can say D minus A is equal to 1872.
Now, if you look at the ratio here, we know that D has got 9 parts, whereas A has got only 3 parts. So the difference of D and A can be taken as 9 parts minus 3 parts, which is equal to 6 parts. So we can say that the difference of D and A, that is 9 parts, let us take it as 9x minus 3 parts, 3x should be equal to 6x, which is given as 1872. And we are supposed to find out the total amount of B and C. Again, from the ratio, we know that the total of B and C will be 5 parts plus 8 parts, that is equal to 13 parts. So we can say that B plus C together have 5 parts, 5x plus 8 parts, 8x, which is equal to 13x. And this has to be calculated. So simply by cross multiplying this part, we can get the answer. So we can say that the total amount with B and C should be equal to 13 into 1872 divided by 6, as x and x anyway gets cancelled. Now by simplifying this, we can get the answer as 312 into 13, which comes out to be 4056. So the total amount with B and C is rupees 4056. So friends, as you have seen in this example, we need not do lengthy calculations for these type of questions. Simply, we can consider the given ratio as number of parts between the persons and then work accordingly from the given information. Let us now take the fourth model from the ratio and proportion, where we are supposed to find out the new ratio when each of the shares are increased by a particular value. Let us look at the question here. Amit, Sumit and Vinit divide an amount of rupees 2,800 amongst themselves in the ratio of 5:6:3 respectively. If an amount of rupees 200 is added to each of their shares, what will be the new ratio of their shares? So we are supposed to find out the new ratio for the three persons Amit, Sumit and Vinit. As we can see from the question, each of the shares is increased by rupees 200. That means the increase in each of the values is the same. Amit gets 200 more, Sumit gets 200 more and Vinit also gets 200 more. But this doesn't mean that ratio will remain same. Remember, whenever the share of each of the persons is increased by a certain value, the ratio will definitely change, though the increase in the shares are equal. So here, we simply cannot say that the new ratio will be 5:6:3 because each value is increased by 200. We actually have to find out the new values and then take the ratio. Let us first find out the actual shares of the three persons. We know that the total amount which has been distributed here is rupees 2,800 and the shares of Amit, Sumit and Vinit are in the ratio 5:6:3. So this can be taken as 5:6:3. Now as discussed earlier, we can consider the total number of parts as 5 plus 6 plus 3. 5 plus 6 is 11, 11 plus 3 is 14. That means the total amount here, 2,800, has been divided into 14 equal parts. So we can say that this 2,800 is nothing but the total 14 parts, which is 14x. So from this we can say that each part will be equal to rupees 200, as x here will be equal to 2,800 by 14, which is 200. Therefore, one part is equal to 200. Now we can simply find out the new values as Amit has got 5 parts. So as one part is 200, 5 parts will be equal to 1,000 rupees. Similarly, Sumit has got 6 parts. So as one part is 200, 6 parts will be 6 into 200, 1,200. And similarly, we can say Vinit has got 3 parts, which should be 3 into 200, that is equal to 600 rupees. So the individual shares of Amit, Sumit and Vinit are 1,000 rupees, 1,200 rupees and 600 rupees respectively. And then he says an amount of 200 is added to each of their shares. So we can say that the new share of Amit, let us take it as A dash, will be equal to 1,000 plus 200, which is 1,200 rupees. Similarly, the new share of Sumit, S dash, will be equal to 1,200 plus extra 200, which is 1,400 rupees. And the share of Vinit will be 600 plus 200, that is equal to 800 rupees. And from these three we can say that the new ratio A dash is to S dash is to V dash will be equal to 1,200 is to 1,400 is to 800. And by simplifying this, we get
200 into 6, 200 into 7 into 4. So the new ratio should be taken as 6:7:4. This is the conventional method of solving the given question. But apart from this, the other way in which we can get the answer directly is as follows. Here, very clearly we know that the total amount is 2,800 and the ratio is 5:6:3, from which we have calculated each part to be equal to rupees 200. Again, in the question it is given that each of the shares are increased by rupees 200. Now this 200 is nothing but equal to one part of the previous distribution. So we can simply say that each of the shares have been increased by one part, as they have been increased by 200 rupees each. So from this directly I can say that the new ratio A dash is to S dash is to V dash should be equal to, they actually have got 5 parts, but now they have been increased by one more part. So the new ratio will be 5 plus 1 6 is to 6 plus one more part 7 is to 3 plus one more part 4. So that's the answer, 6:7:4. So as you can see here, without finding out their actual shares and then taking the new shares, we can directly get the answer by simply increasing the ratio with one part each. But friends, remember that this way of solving the question here is possible only because the increment of each of their shares, that is 200 rupees, is equal to one part of the previous distribution. If the increment in each of their shares are not equal, then we have to go by the conventional method as discussed earlier. Let us now discuss the fifth model from ratio and proportion, where the percentage changes in the shares of each of the persons is given and from which we are supposed to get the new ratio. The question here is the ratio of number of students studying in schools A, B and C is 5:6:8. So the ratio of students in 3 schools A, B, C is 5:6:8. If the number of students studying in each of the schools is increased by 30%, 25% and 25% respectively, what will be the new ratio? So as you can see here, the increment in terms of percentages is given to us and from which we are supposed to get the new ratio. So the original ratio A is to B is to C is equal to 5:6:8. We know that the number of students in school A have increased by 30%, that in school B have increased by 25% and in school C have increased by 25%. So let us add these percentage increments to each of their parts and get the new ratio. Now from this we can say that A has got 5 parts, B has got 6 parts and C has got 8 parts. And the new ratio can be directly obtained as A dash is to B dash is to C dash, that should be equal to original 5 parts plus an increment of 30% in these 5 parts is to B's original distribution is 6 parts, which has now increased by 25%. So 6 plus 25%. Finally, C's original distribution was 8 parts, which has now increased by again 25%. So this can be taken as 8 plus 25%. Remember, we are taking plus because each of these have increased. Similarly, if it is given as percentage decrease, then we need to take negative signs accordingly. Now let us simplify this to get the new ratio. We know that 30% of 5 is equal to 1.5. So 5 plus 1.5 is to, similarly 6 plus 25% of 6 will be 1.5 is to 8 plus 25% of 8 is equal to 2. So the new ratio is 6.5 is to 7.5 is to 10. But this is not a proper ratio as we have got decimal parts here. So let us convert this into a proper ratio, that is each parts in terms of integer by multiplying everything with 2. So 6.5 into 2 gives 13, 7.5 into 2 is 15 and 10 into 2 is 20. So this is the new ratio after the number of students in each of the schools have increased by the given percentages. So the answer here is 13 is to 15 is to 20. One important point which I would like to mention here is that the percentage changes in B and C are same. That is, the number of students in B have increased by 25% and that in C also have increased by 25%. Remember, whenever the percentage changes are same, the ratio will not change.
This can be understood from the old and the new ratio. As we can see from the old ratio, the ratio of B and C was 6:8, and 6:8 is nothing but 3:4. And after increasing each one of them by 25%, we have got the new ratio as 15:20. That is, the ratio among B and C is 15:20, and 15:20 is again nothing but 3:4. So as we can see, the old ratio and the new ratio are equal. So very clearly, whenever the percentage changes are same, the ratio will not change. Let us now understand another important concept from ratios, which involves the combination of two given ratios to get a combined ratio. Let us take some examples to understand that. For example, as we can see here, A:B is equal to 4:5 and B:C is equal to 5:9. So from the given two ratios, how can we get the ratio of A, B and C together? That is nothing but A:B:C will be equal to what? Remember friends, whenever we want to combine two ratios, the variable which is common in both the ratios must be equal. For example, here in A:B and B:C, the variable which is common is B. Therefore, the value of B in both the ratios has to be equal. Only then we can combine the two ratios directly. So here 4:5 and 5:9 are the two ratios. And as you can see, the value of B in the first ratio is 5 and B in the second ratio is also 5. That means these two are equal. And whenever these two are equal, we can directly compare them and get the ratio. That is, A:B:C will be equal to 4:5:9. If you try to observe, the individual ratios have not been changed here. If we consider A and B here, the ratio is 4:5, which is nothing but 4:5 as given in the question. And if we compare B and C here, the ratio is 5:9, which is as given in the question. So it is very clear that we can combine two ratios if the variable which is common in both the ratios is equal. Let us now understand how to combine two ratios when the variable which is common in both of them is not equal. For example, X:Y is equal to 4:3 and Y:Z is equal to 5:6. So as we can see here, the common variable is Y. But the value of Y in the first ratio is 3 and in the second ratio is 5, which is not equal. So we cannot combine the two ratios directly as in the earlier case. Now here, to combine the two ratios and get the ratio of X:Y:Z, we must first be able to make the value of Y equal in both the cases. And that can be done by multiplying both the given ratios with some value such that the value of Y in both the cases is equal. Remember friends, whenever we multiply both the terms in the given ratio by a particular value, the ratio doesn't get affected. For example, here 4 and 3 in the first ratio can be multiplied with a particular value and that will not affect the ratio. So let us see what should be multiplied in the first and the second cases so that the value of Y becomes equal. Now, the first ratio has got Y equals to 3 and the second ratio has got Y equals to 5. Now, a common multiple of 3 and 5 is 15. So, if we try to multiply the first ratio with 5 and the second ratio with 3, the value of Y becomes equal in both the cases. So, the first ratio now will be 4 into 5, 20 is to 3 into 5, 15. And the second ratio is 5 into 3, 15 is to 6 into 3, 18. As you can see, though the values have changed, the ratio still remains 4:3. When we simplify 20:15, we get 4:3. And similarly, in the second case, though the values have changed, when we simplify it further, this becomes 5:6. And now, as Y has become equal in both the cases, we can say that the combined ratio will be equal to 20:15:18. So this is how we can combine two given ratios by making the value of common variable equal in both the ratios. Let us now take some examples based on combination of ratios. Let us take the first example from model 6 that we have just discussed. The question here is, Sita and Geeta's ages are in the ratio 3:4. Geeta and Lata's ages are in the ratio 4:7 and
Lata and Ram's ages are in the ratio 7:9. And from the given ratios, we are supposed to find out what is the ratio of Sita's and Ram's ages. Now to find out the ratio of Sita and Ram's ages, we need to combine all the given ratios. Now as given here, Sita is to Geeta is equal to 3:4. Geeta is to Lata is equal to 4:7. And Lata is to Ram is equal to 7:9. Now to find out the ratio of ages of Sita and Ram, we need to combine these ratios such that we can compare Sita and Ram directly. And as discussed earlier, we can combine given ratios only when the common variables are equal. As you can see in the first two ratios, Geeta is common and the value of Geeta in both the ratios is equal. So these two ratios can be directly combined and we can say that Sita is to Geeta is to Lata should be equal to 3:4:7 as 4 is common in both the cases. Let us now try to combine the obtained ratio with the last ratio. As you can see here, the common part in the two ratios is Lata. And the value of Lata in the first ratio is 7 and in the second ratio also is 7. That means again these two ratios can be directly combined and we can say that Sita is to Geeta is to Lata is to Ram should be equal to 3:4:7:9. Since the common variable is equal in both the cases, we are directly combining them and getting the consolidated ratio. Once we have obtained the overall ratio for all the four ages, we can now compare Sita's and Ram's ages. As you can see, Sita and Ram are the extremes here. That is nothing but 3:9. So we can say that Sita is to Ram should be equal to 3 parts is to 9 parts, which can be simplified further as 1:3. So therefore, the ages of Sita and Ram are in the ratio 1:3. Let us now discuss another example from model 6. The question here is ratio of income of A and B is 3:5 and that of C and D is 9:7 respectively. If the difference between the income of A and C is rupees 4,800, what is C's income? So from the given information, we are supposed to find out the income of C. Let us first consider the two given ratios, that is A is to B is equal to 3:5 and C and D is 9:7. Therefore, C is to B is equal to 9:7. The difference between the incomes of A and C is 4,800. That means A minus C is equal to 4,800. And we are supposed to get the income of C. To compare the incomes of A and C, we must first of all try to make the value of B equal in both the cases. As you can see, the common variable is B, but B in the first case is 5 and in the second case it is 7. So let us try to make both the values equal so that we can get the combined ratio. Now the common multiple of 5 and 7 is 35. So let us multiply the first ratio with 7 and the second one with 5. So we can say that A is to B is equal to 3:7, 21:5:7, 35, and C is to D is equal to 9:5, 45:7:5, 35. Now since both B and B are equal in these two ratios, A and C can be directly compared as 21:45, or we can say that A is to B is to C is equal to 21:35:45. So from this, A and C are 21 parts and 45 parts respectively. Now the given question says the difference of A and C's income is 4,800. We know that A has got 21 parts and C has got 45 parts. So we can say 45 parts difference 21 parts is equal to 24 parts. That is nothing but 4,800 as given in the question. So from this, the value of each part X will be equal to 4,800 by 24, which comes out to be 200 rupees. And the question is, what is C's income? We know that C has got 45 parts, where each part is equal to rupees 200. So C's income can be taken as 45 parts, that is 45 into 200, which comes out to be 9,000. So we can say that the income of C is rupees 9,000.
Let us discuss one more example from the model 6 that we have discussed just now. The question here is, a sum of rupees 817 is divided among A, B and C such that A receives 25% more than B and B receives 25% less than C. What is A's share in the amount? So from the total amount of 817, we have to find out how much does A get. Now we very well know that to find out A's share from the total amount, we should first get the ratio of A is to B is to C. So let us try to find out what is the ratio of A is to B is to C. The first point here is A receives 25% more than B. So we can say that A will be equal to B plus 25% of B. As he receives 25% more than B, we should take it as B plus additional 25% of B. And this can be taken as B plus B by 4, as 25% is nothing but 1/4 of the value. And when simplify this, we get A equals to 5B by 4. That is nothing but A by B is equal to 5 by 4. The second statement here is B receives 25% less than C. So we can say that B is equal to C minus 25% of C. We are taking a negative sign because B receives 25% less than C. So we should take a negative sign. Now, C minus 25% of C is again nothing but C minus C by 4. So by simplifying this, we can say B is equal to 4C minus C, 3C by 4. Or in fact, even directly we can say that C minus 25% of C is 75% of C. And 75% is nothing but 3 by 4. Now from this we can say B by C is equal to 3 by 4. So as you can see, we have obtained the two ratios, A is to B and B is to C. And to combine these two ratios and get the ratio of A, B and C, we must try to make the common variable equal, which is nothing but B in this case. So B in the first case has got 4 parts, in the second case has 3 parts. So let us first try to make it equal. And that can be done by finding out the common multiple of 4 and 3, which is nothing but 12. So let us multiply the first ratio with 3, that is into 3 by 3, and the second ratio with 4, 4 by 4. So this becomes 15 by 12 and this will be 12 by 16. So now the value of B in both the cases is 12, and hence we can say that the combined ratio of A, B and C should be equal to 15 is to 12 is to 16. As you can see, A is to B is 15 is to 12 as we have obtained here, and B is to C is 12 is to 16 as we have obtained here. Now we have to find out A's share from the total amount. From this we can understand that A has got total 15 parts out of 15 plus 12, 27 plus 16, 43 parts. So A's share should be equal to 15 out of 15 plus 12 plus 16. That is nothing but 15 out of 43 parts. And when multiplied by the total value 817, we can get the share of A. So by simplifying this, 43 into 19 is 817 and 15 into 19 will be 285. So we can say that A's share in the total amount of 817 rupees is 285 rupees. So friends, from the examples that we have discussed in model 6, you can understand that to find out the combined ratio, we always need to make the common variable equal in both the ratios. And from that, we can do the further calculation to get the individual shares. That's all from ratio and proportions. See you in the next session. Thank you.